class. We are going to start or continue with chapter number 14, Kinetics of a Particle Work Energy Method. In today's class, we are going to cover these two topics. First of all, we are going to cover the numericals relevant to principle of work and energy. हमने last time कुछ examples solve की थी. आज कुछ exercise के problems जो है वो solve करेंगे. And then we will cover these two topics this week. One is the conservative forces and potential energy, probably वो आज की क्लास में कवर करेंगे, और द अदर वन इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, जो कि प्रोबेबली शायद हम कल की 2 घंटे वाली क्लास में कवर करेंगे. प्लस एक और अनाउंसमेंट जो ऑलरेडी आपके साथ डन हुआ है कि कल की क्लास में इंशाल्लाह वी विल बी कंडक्टिंग क्विज नंबर 3. The topics which are included in quiz number 3 are the last two topics of chapter number 12, which are absolute dependent motion analysis of two particles and the relative motion analysis of two particles. So these are the two topics from which quiz number 3 is going to be conducted in tomorrow's class. Now coming to the principle of work and energy. This principle of work and energy states that the initial kinetic energy of a particle at position 1 plus work done by all the forces in moving that particle from position 1 to position 2 should be equal to the final kinetic energy of the particle. So this was the principle of work and energy, जो कि हमने last class में जो है वो discuss किया था, and we did solve some examples relevant to this topic as well in the previous class. Today we are going to continue with some exercise problems relevant to this principle of work and energy, and then inshallah conservative forces and potential energy को थोड़ा सा आज की क्लास में देखेंगे. Okay, starting with the first problem of today, which is problem 14-18, जिसमें you have a collar which has a mass of 20 kg and it rests on a smooth rod. So once this word smooth arrives, then it means that you are not going to include force of friction in your analysis. This collar is being attached with two springs. One on the left hand side, let us term this spring as spring A, which has a constant of 50 Newton per meter, and then you have another spring which is attached with this collar on the right hand side, and this spring has a constant of 100 Newton per meter. So overall this collar is connected with two springs, and both have different values of K's. Each spring has an uncompressed length of 1 meter. It means that once this collar is in the position shown, that is at the center of this rod, both the springs are unstretched. That is, both of them have a length of 1 meter. Okay, now the statement says that if this collar is displaced 0.5 meters towards the right and then released from rest. आपने किया क्या है कि you move this collar towards the right until this S becomes 0.5. So this S is 0.5 meters, and from this position, let's say कि मैं कहता हूँ this is position number 1, you release this collar from position 1 at rest. Now, because of the spring force, both the springs will try to regain its unstretched position, due to which this collar is going to move towards the left. You need to determine the velocity of this collar at the instant it returns to the position which is S equal to 0. So once this collar returns to its center position, let's say that this is position number 2, then what should be the velocity of this collar at position number 2 as shown to you in the figure. So आपके पास एक collar है जिसके दोनों तरफ springs लगे हुए हैं. आप इस collar को थोड़ा सा displace करते हैं towards the right और rest से release करते हैं from position 1. You need to determine कि once this collar passes position 2, which is the position at the center of this rod, तो वो कितनी velocity के साथ जो है वो travel कर रहा होगा. Is this question clear to all of you? Statement clear है? जी. Okay, so चूंकि आपके पास यहाँ कुछ displacements involved हैं, which is say 0.5, कुछ forces involved होगी, मसलन weight होगा, normal force होगी, spring force होगी, और velocities involved हैं. So F, V और S, the principle which will give you a direct relationship between these two variables, between these three variables, is the principle of work and energy, which states that the initial kinetic energy plus work done by all the forces which are acting on this collar should be equal to the final kinetic energy, which is T2. Okay, one by one, let us evaluate each and every term, starting with the initial kinetic energy. What should be the kinetic energy of this collar at position 1? The rest से start हो रहा है. Since it is starting from rest,
So it should have zero velocity at position 1, which will give it zero kinetic energy at position 1. Now, if we draw a free body diagram of this collar, the forces which would be acting on this collar are shown to you here. One is the weight of the collar, which would be acting downward. The second force would be the normal reaction force when you remove the rod connection from this collar. So you are going to get a normal reaction force here. Any other force which you want to include in the free body diagram? रेस्ट पे तो uncompressed है वो. Between position 1 and 2, is there any other force which would be acting on this collar? What about the spring forces? Spring force F spring A as well as spring force F spring B would be acting in the directions as shown to you between position 1 and 2. Position 1 और 2 के दरमियान किसी भी एक पोजीशन पे मैं अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो लेफ्ट स्प्रिंग चूंकि स्ट्रेच हुआ हुआ है वो इस कॉलर को टुवर्ड्स द लेफ्ट मूव करने की कोशिश करेगा. इसी तरह राइट स्प्रिंग कंप्रेस हुआ हुआ है वो भी इस कॉलर को टुवर्ड्स द लेफ्ट मूव करने की कोशिश करेगा. Therefore, both the spring forces would be acting towards the left as shown to you in the free body diagram. Is it clear to all of you? Yes, sir. Okay, so we have talked about T1, which is the initial kinetic energy at position 1. It should be equal to 0. The kinetic energy at position 2 can be represented as half m V2 square, where m is 20 kg and V2 is an unknown quantity which needs to be determined in this problem. So kinetic energy is half mv square. Okay, what should be the forces that will be contributing towards work done? क्या weight work की तरफ contribute करेगा? No, sir. So weight would not be contributing towards work. Similarly, what about normal reaction? Will it be contributing towards work done? No, sir. Since normal reaction is also acting perpendicular to the direction of displacement, so it would not be contributing towards the work done. So you can write UNC to be equal to 0 as well. It means that the only forces that would be contributing towards work are the spring forces due to spring A and spring B. Okay, starting with the spring force A. What is going to be the work done due to this spring force A, USPA? It is going to be minus half Ka SA2 square minus half Ka SA1 square, isn't it? यही होगा spring force की वजह से work. Okay, can you identify SA1 and SA2? At 1.5 और एक 1 है. At position 1, which is this position shown to you here, spring A जो कि left side पे है वो अपनी unstretched position से कितना displace हुआ हुआ है? 0.5. 0.5. और at position 2 spring A अपनी unstretched position से कितना displace हुआ हुआ है? 0. 0. So it means that SA1 is going to be 0.5 and SA2 is going to be 0. What about SB1 and SB2? Spring B जो है वो position 1 पे कितना displace हुआ हुआ है? Minus 0.5. माइनस 0.5 कह लें या चूंकि वो आपका स्क्वायर आ रहा है तो माइनस साइन अगर आप इग्नोर करना चाहें तो आप इग्नोर कर सकते हैं और वो सिंपली 0.5 होगा. व्हाट अबाउट SB2? इट शुड बी इक्वल टू 0. पोजीशन 2 पे तो दोनों स्प्रिंग्स अनस्ट्रेच हैं तो पोजीशन 2 पे दोनों स्प्रिंग्स का जो SA है वो 0 आ जाएगा. पोजीशन 1 पे दोनों अपनी अनस्ट्रेच पोजीशन से 0.5 डिस्प्लेस हुए में, यानी स्प्रिंग ए इलोंगेट हुआ हुआ है और स्प्रिंग बी जो है वो कंप्रेस हुआ हुआ है, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका चूंकि 0.5 है तो इसलिए दोनों वर्क डन जो है वो हमारे पास जो है वो 0.5 आएंगे. सो ओवरऑल
the initial kinetic energy at position 1, जिस तरह अभी हमने बात की, it is going to be equal to 0. This is the final kinetic energy. This is the work done due to spring A, which is on the left hand side. This is the work done due to spring B, which is on the right hand side. दोनों जो है वो position 2 पे आके 0 0 हैं, दोनों position 1 पे 0.5 हैं. So once you solve it, the only unknown thing here is V2. So once you solve it, V2 comes out to be 1.37 meters per second. So this is going to be the velocity of this collar once it passes its center position. Is this thing clear to all of you? Yes, sir. Okay. Can you identify the maximum stretch or compression in these two springs? Can you identify it? Yes, sir. वो final position पे इसकी velocity 0 हो जाएगी. Okay, so we will put the final V2 to be equal to 0. That will give us the maximum deformation of these springs from its unstretched position. In that case, we are going to take probably S2 जो है वो कितना हो जाएगा? अगर मैं कहूँ कि मैं इसी पोजीशन से छोड़ता हूँ, ये मेरी पोजीशन 1 है, इस पे दोनों S1 जो है वो 0.1 हो जाएंगे, से ये मेरी पोजीशन 2 आती है जिसपे वो मैक्सिमम कंप्रेस हुए हुए हैं, उससे आप जो है वो उसको से S कर लें तो आपको जो है वो S की वैल्यू यहाँ से मिल सकती है. हो जाएगा, कोई इश्यू तो नहीं है? So yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हो जाएगा. Okay, so moving on to a slightly complicated problem of the exercise, which is problem 14-34. If the coefficient of kinetic friction between the 100 kg crate and the inclined plane is 0.25, it means that you have a rough inclined plane, so you need to include friction as well here. You need to determine the speed of this crate at the instant the compression of the spring becomes x equal to 1.5 meters. Initially, the spring is unstretched and the crate is at rest. So you need to perform the analysis on this crate. This is going to be position 1 from where this crate is being released from rest. This crate is going to move down this incline and it is going to strike this spring. You need to find out that once this crate has compressed this spring to a distance of x equal to 1.5 meters, what is going to be the velocity of this crate? I hope that the question is clear to all of you. Yes, sir. Okay, now starting with first of all drawing the free body diagram of this crate between position 1 and position 2. Probably the forces which would be acting on this crate are, the first force is going to be the weight of this crate which would be acting vertically downward. Then once you remove that inclined plane, you are going to get a normal reaction force which is going to be in a direction which is perpendicular to the contacting surface between the crate and the inclined plane. So these are the two forces that would be acting on this crate. Then there is going to be some spring force because the spring is compressing. As a result, you are going to get the spring force in this direction as shown to you here. Is there any other force which I must show on this free body diagram? Yes, sir. Friction force. Since the plane is not smooth, it is a rough plane, so there is going to be friction force and the direction of that friction force is going to be up the incline. So these are the four forces that would be acting on this crate from position 1 to position 2, जो कि आपको show की गई है when the spring is being compressed 1.5 meters. This angle is known to us as 45 degrees. Okay, again, since you have forces involved here, the velocities are involved as well as the displacement is involved here. So FVNS, work and energy principle, is going to give you a direct solution. So applying the principle of work and energy on this crate from position 1 to position 2, the work energy principle says that the initial kinetic energy of this crate plus work done by all the forces in moving the crate from position 1 to position 2 should be equal to the final kinetic energy of this crate. Okay, what about the initial kinetic energy of the crate? Sir, 0 V. Since it is being released from rest at position 1, so the initial kinetic energy of this crate is going to be 0. As far as the final kinetic energy of this crate is concerned, it is going to be half m v2 square, where v2 is an unknown quantity, so you need to determine the value of v2 here. Okay, coming towards the work done terms.
If we take a look at the free body diagram, can you identify the forces that would be contributing towards work done? सर वर्क डन एक फ्रिक्शन फोर्स कर रहा है और दूसरा स्प्रिंग फोर्स. ओके, एक आपने कहा फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक आपने कहा स्प्रिंग फोर्स वर्क और कर वेट रहे भी हैं. कर रहा है. वेट भी And कर रहा है since सर. the weight is also being vertically displaced, so there is going to be work done due to weight as well. So आपके पास U, W भी जो है वो आएगा. So three forces would be contributing towards the work done term: the weight, friction force, as well as the spring force. एक एक करके स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द वर्क डन ड्यू टू वेट. As per our previous discussion, the work done due to weight would have a magnitude of W times delta Y. Should it be positive or negative work done? सर पॉजिटिव. The weight is acting downward. The vertical displacement is also acting downward. So work done due to weight is going to be a positive quantity. Weight is going to be equal to 100 into 9.81. What about this delta Y? Can you identify the value of delta Y? सर साइन 11.5. So if I write it as 10 plus x sine 45, is it going to be correct where x is 1.5 meters? मैंने x की टर्म में लिखा है इसको. यस सर. ठीक है, so it is going to be 10 plus x, or you can directly write 11.5 sine of 45. So this is going to be the work done due to weight. Is this point clear to all of you? Okay, the next point is work done due to force of friction. Now since force of friction is being involved here, so shall we first find the value of NC and how we can find that? Sir, equation of motion at position 1. So applying the equation of motion, summation Fy equal to 0 will give you the value of Nc to be equal to W cos 45. ठीक है? So that is how you have found the value of Nc to be equal to W cos of 45. Okay, now what should be the work done due to this force of friction? Mu Nc into 11.5. So mu Nc into say 10 plus x, मैं इसको x की टर्म में लिखता हूँ क्योंकि मैं इसको कहीं और भी यूज करना चाह रहा हूँ. So mu Nc into 10 plus x, should it be positive or negative? Negative. Since friction force is acting opposite to the direction of displacement, so that's why this work done due to force of friction is going to be a negative quantity. Is this point clear to all of you? Yes, sir. Okay, now coming to the third term, which is work done due to spring force. By formula, it is minus half k S2 square minus half k S1 square. What should be the value of S1 at position 1? Is the spring being displaced from its unstretched position? No, sir. 0. So this S1 is going to be equal to 0. What about S2? 1.5. It is going to be x, which is 1.5. So once you solve this equation, overall, this is going to be the total equation. The initial kinetic energy, which is 0. This is the work done due to weight. This is the work done due to spring force, work done due to friction, and this is the work done due to spring force. And this is the final kinetic energy. So in this equation, the only unknown quantity here is the velocity v2. So once you solve it, this velocity comes out to be 8.64 meters per second. Is it clear to you all? Yes, sir. Okay, now let me change the question a little bit. मैं आपसे कहता हूँ कि instead of finding the final velocity which is being asked in 14-34, you need to determine the maximum compression that can occur in this spring in order to stop this block. How you are going to determine the maximum compression in this spring in order to stop this block? क्या change आनी है इसमें? V final 0 put कर देंगे. तो उस केस में V2 हम 0 पुट कर देंगे और इस इक्वेशन को मैंने x की टर्म में जो लिखा था, सो आई एम गोइंग टू सॉल्व इट फॉर x, जो कि एक ही अननोन है. मुझे ये x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, विच रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम कंप्रेशन इन दैट स्प्रिंग नीडेड टू स्टॉप दैट ब्लॉक.
Is this point clear to all of you? Yes, sir. Okay, so with this, we are done with this topic of principle of work and energy. If you have any queries, any question regarding the principle of work and energy, you can ask now. Otherwise, we are going to move forward towards the next topic. और इसमें भी सर अगर इसमें ये भी मांगा हुआ हो कि वापस ये बॉक्स को कितना वापस हाइट पे रिपेयर करेगा। बिल्कुल ठीक है, वो आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सर फिर इनिशियल जो एनालाइजेशन आपका होगी तो स्प्रिंग पे रहेंगे। इनिशियल पॉइंट ये हो जाएगा फिर जिस पे वो स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस है, उस स्टेज पे वेलोसिटी आपके पास 0 आ जाएगी, और उसके बाद जब आप रिलीज करेंगे तो ये आपकी पोजीशन 2 हो जाएगी, जब दोबारा जाके वेलोसिटी जो है वो 0 होती है। सही सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके, सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। इसमें मैंने पावर और एफिशिएंसी की कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं करवाई है। वो एक आध एग्जांपल आप चाहें तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर सकते हैं, लेकिन वो चूंकि सिंपल है, पावर हमेशा जब जहां पावर फाइंड करने के लिए कहा जाए, यू कैन सिंपली टेक द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। व्हेनेवर यू आर बीइंग आस्क्ड टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी, इट इज बेसिकली पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट या एनर्जी आउटपुट ओवर एनर्जी इनपुट। तो आप उसकी एक दो प्रॉब्लम्स देख लीजिएगा, एग्जांपल के तौर पे भी हुई है। वो सिंगल लाइन की प्रॉब्लम है, सिंपल आपने फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके पावर निकालनी है, और इसी तरह एफिशिएंसी के लिए आप आउटपुट ओवर इनपुट की रेशो ले लेते हैं। Okay, moving on to our next topic, which is these two topics which are related to each other. The first one is the conservative forces and potential energy, and the second one is the conservation of energy principle. So today we are going to start with this topic, which is conservative forces and potential energy. Inshallah कल के 2 घंटे वाली क्लास में हम conservation of energy वाले टॉपिक को जो है वो कवर कर रहे होंगे। Okay, starting with conservative forces and potential energy. First of all, what is a conservative force? उसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा उसकी अंडरस्टैंडिंग को हम डेवलप कर रहे होंगे। A conservative force is the force acting on a particle that depends only on the net change in particle's position and is independent of the particle's velocity and acceleration. Moreover, you can identify a conservative force to be a force जिसका वर्क डन जो है that does not depends upon the path. Rather, this work done is basically independent of the path followed by the particle, and it only depends upon the initial and final position. For example, the weight of the particle and elastic springs are two examples of conservative force. थोड़ा सा इस चीज को समझने के लिए आई होप कि ये ब्लैंक स्लाइड हर एक को नजर आ रही है। Yes, sir. Okay, in order to understand what is a conservative force, let us consider a particle, which is, say, this particle shown to you here, and this particle is being moved from position 1 to, say, position 2, which is shown to you here, using a path which is being the path shown to you as a blue path. So at position 1, the weight of this particle would be acting downward. Similarly, position 2 के ऊपर the weight of this particle would be acting downward. So if I ask you people that what is going to be the work done due to weight once it is being moved from position 1 to position 2, क्या आप जवाब दे सकते हैं? Yes, sir. क्या होगा? Sir, weight multiply vertical distance. Weight multiplied by vertical displacement. Okay. Okay, now let us change the path. मैं कहता हूँ ये पार्टिकल बजाय ब्लू पाथ फॉलो करने के इस ग्रीन पाथ को फॉलो करते हुए इस पोजीशन 2 तक पहुंचा है। ठीक है, in that case what should be the work done? Same. W delta y. Similarly, if you have moved this particle using the third path, which is shown to you here purple, again the work done is going to be W times delta y. So basically हो क्या रहा है कि आपका जो work done है weight की वजह से it does not depend upon the path, rather it is only dependent upon the initial and final positions and how much this weight is being vertically displaced between those two positions. So weight is an example of a conservative force, जिसमें हमने define क्या किया था कि conservative force का work जो है वो path के ऊपर depend नहीं करता,
rather it only depends upon the initial and final position. इस पॉइंट को क्लियर है सारों को? ये वेट की वजह से वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ. Yes, sir. ओके, नाउ लेट अस चेंज समथिंग हियर. मैं करता क्या हूं कि मैं कहता हूं कि ये पार्टिकल जो है ये मैंने कनेक्ट कर दिया है एक स्प्रिंग के साथ एज वेल. ठीक है, और अब मैं इस पार्टिकल को पोजीशन 1 से 2 के दरमियान मूव कराता हूं, जिसकी वजह से स्प्रिंग जो है वो इन दो पोजीशंस के दरमियान कुछ इस तरह का मूव हो जाएगा. सो द वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स is going to be equal to, as per our previous discussion, minus half k s2 square minus half k s1 square. ऐसा ही है? जी सर. अगर मैं ब्लू पाथ फॉलो करता हूं तो S1 और S2 की जो वैल्यूज हैं, क्या पाथ चेंज करने से S1 और S2 की वैल्यूज में कोई चेंज आ रहा है? यस सर, वो तो एक्सटेंशन कम और ज्यादा हो रही है. देखें, आपकी एक्सटेंशन स्प्रिंग की डिपेंड कर रही है. S1 इज L1 माइनस L0 और S2 इज L2 माइनस L0. ऐसा ही है? यस सर. तो अगर मैंने ब्लू वाला पाथ फॉलो किया है तो क्या L1 माइनस L0 और L2 माइनस L0 इस ग्रीन पाथ या पर्पल पाथ से डिफरेंट होंगी? या सर सेम लग तो होंगी? ऐसे रहा है, डिफरेंट हुई होगी. देखें, आपके ये जो स्प्रिंग का वर्क डन है ये किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है कि पोजीशन 1 पे ये स्प्रिंग कितना अपनी अनस्ट्रेच पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ हुआ है, पोजीशन 2 पे स्प्रिंग अपनी अनस्ट्रेच पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ हुआ है. ये पाथ फंक्शन पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, ये तो सिर्फ स्प्रिंग की एक्सटेंशन या कंप्रेशन पे डिपेंड कर रहा है. ऐसा ही है? यस सर, बिल्कुल. देखिए, आप अगर ब्लू पाथ फॉलो करते हैं तब भी इसका S1 और S2 वही रहेगा. अगर आप पर्पल पाथ फॉलो करते हैं तब भी S1 और S2 वही रहेगा, क्योंकि पोजीशन 1 और 2 पे तो स्प्रिंग उतना ही स्ट्रेच हुआ हुआ है ना जितना ब्लू पाथ के हवाले से हुआ हुआ है. या अगर आप ग्रीन पाथ फॉलो करते हैं तो अगेन एट पोजीशन 1 जो स्प्रिंग अपनी अनस्ट्रेच पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ हुआ है उतना ही रहेगा. सो बेसिकली जो स्प्रिंग का वर्क डन है दैट इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, rather it only depends के स्प्रिंग पोजीशन 1 और 2 पे अपनी अनस्ट्रेच पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ हुआ है. सो बोथ दिस वर्क एज वेल एज स्प्रिंग फोर्स आर एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस. सो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती हैं? अ कंजर्वेटिव फोर्स इज अ फोर्स whose work done does not depends upon the path, rather it only depends upon the initial and final position. Is this definition of a conservative force clear to all of you? यस सर. सर हम ये कह सकते हैं कि जो स्प्रिंग फोर्स में x1 और x2 है ये वेक्टर्स है, इसलिए वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा. वेक्टर्स तो नहीं है, ये बेसिकली स्प्रिंग की स्ट्रेच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2. अच्छा चलें एक सेकंड रुकें, मैं आपसे कहता हूं कि अब जरा फाइंड आउट करें वर्क डन ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन कितना होता है? म्यू एनसी इंटू एस. इसमें ये एस क्या चीज होती है, क्या मुझे बता सकते हैं? सर डिस्टेंस. पाथ की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना ये एस. जी सर. So once you are following that blue path, S is going to be different. Once you are following green path, S is going to be different. Once you are following purple path, S is going to be different. It means that the work done due to force of friction depends upon the path length as well. The larger the path length, more would be the work done due to force of friction, isn't it? यस सर, बिल्कुल. इसी तरह अगर मैं सपोज आपसे कहता कि आपके पास यहां आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स कर रहे हैं F, अप्लाइड फोर्स का वर्क डन किसके बराबर होता है? F इंटू कॉस थीटा इंटू पाथ लेंथ. ऐसे ही है? यस सर. सो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन S. यहां से यहां तक S कम है तो अप्लाइड फोर्स की वजह से वर्क कम आएगा, यहां से लेके यहां तक S ज्यादा है तो अप्लाइड फोर्स की वजह से वर्क ज्यादा आएगा. सो अप्लाइड फोर्स हो गई या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गई, दे आर बेसिकली एग्जांपल्स ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, बिकॉज इनका जो वर्क है वो पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है. इसके मुकाबले में जो वेट है
और स्प्रिंग फोर्स है, इनका वर्क डन चूंकि पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस. सो आई होप दैट नाउ द डेफिनेशन ऑफ अ कंजर्वेटिव एंड अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Yes, sir. तो हर एक को कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का आइडिया हो गया है. Yes, sir. Okay, so now moving on to our main topic, which is conservative force and potential energy. So जिस तरह अभी बात हुई थी, work done by weight of a particle is independent of the path. So आपके पास ये जो weight of a particle है, चूंकि ये path पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो आपके पास ये एक एग्जांपल आ गई है कंजर्वेटिव फोर्स की. इसी तरह स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन हमने देखा कि S1 और S2 पे डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस. इसके मुकाबले में आपके पास जो फ्रिक्शन फोर्स हो गई या इवन अप्लाइड फोर्स हो गई, इनका वर्क डन चूंकि पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. Okay, now moving on to potential energy. Energy may be defined as the capacity of doing work. So when this energy comes from the motion of a particle, it is referred to as kinetic energy. हम kinetic energy कहते रहे इससे पहले कि it is half mv square, which basically which is the energy due to the motion of this particle. और kinetic energy को हम represent करते रहे इस book में using the alphabet T. When energy comes from the position of the particle, और जब हम position की बात करते हैं तो definitely that position is going to be measured from some datum or reference plane, then that energy is basically termed as the potential energy. In other words, the potential energy is the measure of the amount of work which a conservative force will do when it moves that particle from its current position to the datum. अब potential energy को इस book में हम जिस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो Vg है. सो वो V है, so V is going to be used for representing the potential energy in a similar fashion जिस तरह हमने कैपिटल T को यूज किया था for representing the kinetic energy. So potential energy is the measure of the amount of work which a conservative force will do when it moves that particle from a given position to the datum. Now there are two different types of potential energies which we would be discussing. The first one is the gravitational potential energy, which is due to the weight of this particle. The second one is the elastic potential energy, which is going to be due to the elastic spring being connected with the particle. So हमारे पास दो तरह की potential energies इस course में हम discuss करेंगे. One is the gravitational potential energy Vg. The other one is the elastic potential energy, which is Ve. And the total potential energy is going to be the sum of both these potential energies. So Vg plus Ve is going to be the total potential energy which is being represented by the alphabet V. Clear है ये चीज कि हम V किसको कहते हैं? V is basically our total potential energy which is going to be the sum of gravitational potential energy and the elastic potential energy. Okay, gravitational potential energy क्या होती है? थोड़ा सा gravitational potential energy की कहानी को अगर हम समझें, अगर हमारे पास टाइम है अभी 2 मिनट, probably this is going to be the last slide जो कि हम अभी कर रहे होंगे. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये कहानी तो आप सुकून से जाके एक दफ़ा पढ़ ही लीजिएगा. एक दफ़ा मैं आपको आसान अल्फाज में समझा दूं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम कहते कब हैं. ओके, जिस तरह से पहले अभी बात हुई है कि पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली द पोटेंशियल ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल. और ये पोटेंशियल एनर्जी हम हमेशा किसी ना किसी डेटम से, किसी ना किसी रेफरेंस से जो है वो मेजर करते हैं. So let us consider a particle which is being located at some position above the datum as shown to you here, that this particle is located at a position delta y above this selected datum जो भी आपने select किया है. So once you remove or once you say that what is the potential of work done due to weight, आप इस पार्टिकल को जब इस पॉइंट से डेटम की तरफ लेकर आते हैं तो इट हैज द पोटेंशियल ऑफ डूइंग पॉजिटिव वर्क. पॉजिटिव वर्क मींस कि आप इससे वर्क आउटपुट जो है वो ले सकते हैं. द अमाउंट ऑफ वर्क आउटपुट विच यू कैन टेक फ्रॉम दिस पार्टिकल इज गोइंग टू बी W टाइम्स डेल्टा वाई, जिससे पहले हम कहते रहे हैं. इसके मुकाबले में अगर आपके पास एक पार्टिकल है विच इज बीइंग लोकेटेड एट सम पॉइंट बिलो डेटम, तो उसके ऊपर you have to perform some work on that particle in order to move it back to the datum. In other words, you need to perform some work input on that particle in order to move this particle
from its current location to the datum. So आपके पास जो पोटेंशियल है वर्क डन का वो उसी हिसाब से अगर पार्टिकल डेटम से बिलो लाई करता है मैग्नीट्यूड तो उसका W डेल्टा वाई होगा बट इट हैज अ नेगेटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. इसके मुकाबले में अगर एक पार्टिकल अबव द डेटम लाई करता है तो इट हैज अ पॉजिटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यानी वो वर्क आउटपुट कर सकते हैं अगर डेटम से अबव लाई है, वो वर्क इनपुट आपको करना पड़ेगा अगर वो डेटम से बिलो लाई होता है. अगर एक पार्टिकल डेटम पे लाई करता है तो इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी पोटेंशियल ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू ग्रेविटी इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0. सो समराइजिंग, हम जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हैं तो दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैन आइदर बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी W डेल्टा वाई अगर वो पार्टिकल डेटम से अबव लाई करता है, इट कैन आइदर बी 0 if that particle lies at the selected datum, or it can be negative minus W delta y if this particle lies below the datum. So आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पॉजिटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है डिपेंडिंग कि वो पार्टिकल कहाँ लाई किया हुआ है. अगर वो डेटम से अबव लाई करता है तो इट हैज अ पोटेंशियल ऑफ डूइंग पॉजिटिव वर्क, अगर वो डेटम से बिलो लाई करता है तो इट मींस दैट यू नीड टू परफॉर्म वर्क इनपुट ऑन दैट पार्टिकल इन ऑर्डर टू मूव इट बैक टू द डेटम, और अगर वो डेटम पे लाई करता है तो इट हैज जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी Vg हर एक को क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो सिंस चूंकि अभी 12:14 हो चुके हैं, वी आर गोइंग टू स्टॉप एट दिस पॉइंट. हम इंशाल्लाह इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की कल बात करेंगे और फिर हम वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी से थोड़ा सा रिलेट करेंगे कल की क्लास में, एंड देन वी विल डिराइव द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल जो कि वर्क और एनर्जी प्रिंसिपल से ही डिराइव किया गया है, उसकी हम कल बात करेंगे. सो फॉर द टाइम बीइंग वी आर गोइंग टू स्टॉप ऑन दिस स्लाइड. इंशाल्लाह टुमारोज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस नेक्स्ट स्लाइड विच इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. फिलहाल ग्रेविटेशनल के हवाले से या प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन ऑलवेज आस्क एट दिस पॉइंट.